फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 10 लाइट का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। आज शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है। Sorry. A highly polished surface such as mirror, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस का मतलब जो रिफ्लेक्ट कर सके, लाइट को। हाईली पॉलिश्ड मीन्स इट इज हाईली, it can highly reflect, that is it can reflect maximum light falling on it. So if it is the incident ray, this will be a reflected ray. और in between हम लोग यदि इसका यदि खींचते हैं perpendicular, that is the normal जिसको बोलते हैं, normal खींचने से that this will be 90 degree. So one side, this is the incident angle, another side this is the incident ray, this is the reflected ray. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप एक यह पढ़ेंगे इसमें कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यह है दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और यह है दिस इज द normal, this is the normal, this is the normal. This is the point of incidence, point of incidence. तो इसमें दो तरह के लॉ होंगे। फर्स्ट लॉ है द एंगल of incidence, angle of incidence will be equal to angle of reflection. So angle of incidence is we can define it like this is the normal, the angle made by the incident ray with the normal. So ये जो एंगल होगा, this angle will be angle I, okay, and this angle will be angle R. So angle I or angle R, this is the first law. रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। दूसरा लॉ है that is the incident ray, second is reflected ray, and normal. All in a single plane, all in a single plane, or in a single plane, or all in single plane. So single plane, what it means, it means ये जो आप इसमें that is incident ray देख रहे हैं, ये normal देख रहे हैं, और जो ये RR means reflected ray देख रहे हैं, सभी एक ही प्लेन में होंगे, सभी एक ही प्लेन में। कौन सा प्लेन है? दिस इज द प्लेन। नीचे जो है ये दिस इज द सरफेस ऑफ ए बॉडी, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है,
एंड ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन में, इन दिस प्लेन, इन दिस प्लेन, इन दिस प्लेन, तो क्या है, one is the incident ray, another is reflected ray and third is normal. वो तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं. ये दोनों हो गया आपका लॉ रिफ्लेक्शन का. अभी आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या है, what is written in the book, a highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it. क्या है, हाईली पॉलिश सरफेस यदि होगा, सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. यदि 100% रिफ्लेक्शन होगा तो वो पूरी सभी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देगी और कोई भी लाइट रेज ऑब्जॉर्ब नहीं होगी. दैट विल बी द 100% रिफ्लेक्शन एंड that will be achieved by very highly finished polished surface. And mirror में क्या होता है, mirror is just like this. You can see this is the mirror, sorry, you can see it like this is the mirror. In this, here in this surface, this is highly polished, so highly polished surface is there, highly polished. So highly polished surface. So when this is the glass, this is the glass, this is the glass. So when any ray is incoming and then going to the surface, it will be reflected back. Okay, it will be reflected back. This is the incident ray. This will be the normal. This will be the normal. So this is the incident ray. So this will be the angle I, and this will be the angle R. This you can see. This is the angle I. This is the angle R. So if it is highly polished, this surface will reflect most of its light. सभी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देगी. जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, दैट इज आई, एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट का आर बन रहा है, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. So here it is. Let us recall these laws. The angle of incidence is equal to angle of reflection. ठीक है, angle of incidence is equal to angle of reflection. Incident ray, the second law is the incident ray. Okay, this is the incident ray. The normal on the mirror, this is the normal, and the see, this is normal to the mirror at the point of incidence. This is the point of incidence. ये कौन सा है, ये क्या है, point of incidence, जहाँ की इंसिडेंट रे आ रही है, हिट कर रही है, सरफेस को रिफ्लेक्ट कर रही है. दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. उस इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो नॉर्मल खींचेंगे, दैट इज द नॉर्मल. इट इज हियर, इट इज, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, रे है, और एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे. और ये यहाँ आपको दिखा दूं, सॉरी, this is the reflected ray. So reflected ray, ये तीनों एक प्लेन में रहेंगे. This is the reflected ray. तीनों एक प्लेन में रहेंगे, सॉरी,
this all will be in a plane. कैसे? this all will be in a plane. एक प्लेन ये है, एक प्लेन, इसी प्लेन में ये तीनों रहेंगे. So draw this a plane. This is the plane, same plane in which this is the plane, this is the plane, this is the plane. So in which incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence. क्या क्या है? Incident ray, reflected ray and normal at point of incidence. This all will lie in a plane. ये तीनों एक प्लेन, सिंगल प्लेन, इन ए सिंगल प्लेन. ठीक है. Okay. So these are the laws of reflection. ये laws of reflection आपने पढ़ा. These laws of reflection are applicable to all types of reflecting. सभी तरह के reflecting surfaces के लिए applicable है, including spherical surface के लिए भी. You are familiar with the formation of image by plane mirror. में कैसे image बनता है ये आप जानते होंगे. किस तरह का रियल बनता है, इमेजिनरी बनता है. प्रॉपर्टी क्या होता है इमेज का? Image formed by a plane mirror is always virtual. कैसा होता है? Not real. It is always virtual. ये कैसा होता है? Virtual होता है. It is always virtual and erect. So plane mirror में क्या होता है? प्लेन मिरर virtual and erect. So virtual means not real and erect, that is straight, not if it is erect means this is the same like that of the object, so it is straight as that of object. It is as straight as that of actual object or real object. So the plane mirror making the plane mirror किस प्रकार का बना रहा है? इमेज फॉर्म कर रहा है वर्चुअल और इरेक्ट, सीधा इमेज बना रहा है. ठीक है. सीधा करने का मतलब ये यदि मान लीजिए ऐसा है, यहाँ यदि प्लेन मिरर रख रहे हैं तो पीछे ऐसा ही इमेज बनेगा. ठीक है. इसका उल्टा नहीं बनेगा कि जैसा मान लीजिए ऐसा उल्टा नहीं बनेगा. ऐसा ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला जो दिखा रहा है ये वाला नहीं बनेगा. So this will be erect. और जितना मिरर से दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे बिहाइंड उसका मिरर से वो इमेज बनता है. द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. जितना आगे रहेगा, जैसे मिरर है ये यदि ऑब्जेक्ट यहाँ लगाया, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही पीछे में यह ऑब्जेक्ट, उतना ही डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा. ठीक है. And the size also will be the same in plane mirrors. Further, the image is laterally inverted. Laterally inverted होता है means यदि मान लीजिए इधर नॉर्थ लिखा, n लिखा, इधर साउथ लिखा, इधर आपको s दिखेगा, इधर एक मिनट. This is laterally means आप यदि अपने इस हाफ पोर्शन को देखना पड़ेगा. दैट इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड मतलब यदि मान लीजिए आपका लेफ्ट और राइट हैंड मिरर में देखें, लेफ्ट और राइट हैंड मिरर में देखें
मिरर में देखने पे आपका राइट हैंड जो है वो मिरर में देखने में जो इमेज देखेंगे उसमें वह राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाता है, और जो आपका एक्चुअल लेफ्ट हैंड है उसका मिरर में देखने पर वह इमेज का राइट हैंड मालूम होता है। ठीक है, यह एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। ये हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व? तो इमेज किस प्रकार का होगा जब भी सरफेस जो कर्व होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यह पढ़ेंगे। थैंक यू।